You mentioned you made about 1.8 CR in 30 days. ये कैसे होता है? It's Indian dropshipping, What's the most amount of money you've made in a day? about 4 crores. How easy or practical is it? ज़्यादा को पैसे नहीं चाहिए इंडिया में, आपको यार 20-30 हज़ार रुपये में आप शुरू कर सकते हो. अच्छा, But when I got around these guys, they were doing $1 million months. दिमाग हिल जाता है भाई कि is this even possible? If you treat your business like a side hustle, it will give you returns like a side hustle. I worked hard, I showed up, I did all those things, right? वो तो मतलब prerequisites हैं. अगर आप लोगों को लगता है मैंने कोर्स ले लिया और मैं करोड़पति बन जाऊंगा. let's say somebody wants to start this business and they have 10,000 rupees in their hand. Turning point for me was when I got a mentor in the US and it changed the game. Today there are a lot of fake gurus. अगर मेरे को सिर्फ 50k a month कमाना है in profit, so can I do it as a side hustle? Yes. So the beauty of this business is that you can get profitable in the first week. Oh, I should be passionate about what I do. You don't have to be passionate. You have to be passionate about your bank balance. That's it. What is a realistic goal they can set for themselves? A lakh a day in sales is very possible. So let's say somebody's listening to us and they want to make their first crore before 2024 ends. Okay. So what advice would you give them? I think the first step should be भाई मैं ना कल परसों एक रील देख रहा था जिसमें यू मेंशनड यू मेड अबाउट 1.8 CR इन 30 days. तो मैंने बोला यार ये कैसे होता है? तो लाइक व्हाट इज इट दैट यू डू? तो पहली बात तो काफ़ी पुरानी रील है. आई थिंक इट्स फ्रॉम लास्ट ईयर इन जून समटाइम. इट्स इंडियन ड्रॉप शिपिंग. मोस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन डूइंग इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, बट मैंने लास्ट ईयर बेसिकली पिवट किया इंडिया में बिकॉज होम मार्केट है यार, एडवांटेज है. सो आई जस्ट यूज़ द कॉन्सेप्ट जो मेरे को यूएस में ऑलरेडी एक तरह से ढंग से आते हैं, इंडियन मार्केट में अप्लाई किया और ड्रॉप शिपिंग के थ्रू फॉर पीपल दैट डोंट नो कि भाई सप्लायर है एक, उससे प्रोडक्ट उठाया और उसको टेस्ट किया फेसबुक एड्स के थ्रू और जो चला उसको उड़ा दिया. सो दैट्स व्हाट हैपेंड देयर. या तो हाउ इजी और प्रैक्टिकल इज इट टू डू दिस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस? सो द इंटरनेशनल मार्केट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड. बहुत हार्ड है यार. आई वुड से 10x हार्डर इंडिया से. वहाँ के कस्टमर्स अलग हैं. वहाँ का मतलब मैं कभी यूएस गया नहीं हूँ फॉर एग्जांपल, तो उधर की साइकी समझना मेरे को यहाँ बैठ के एक बहुत टफ है. बट अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपको पता है भाई कि आपका पान वाला कैसे सोचता है, या आपका कैबी कैसे सोचता है, या आपके दोस्त कैसे सोचते हैं. सो यू ऑलवेज लाइक दिस, ऑलवेज नो योर कस्टमर, राइट? सो इफ यू डोंट नो योर कस्टमर, हाउ कैन यू सेल टू देम? बट थ्रू द इंटरनेट वी हैव वेज टू फिगर आउट व्हाट द कस्टमर लाइक्स. वही वाली बात होती है यार, कभी भी आप मैच खेलो क्रिकेट का, होम ग्राउंड और अवे ग्राउंड वाली बात है, और होम ग्राउंड में हमेशा एडवांटेज होता है, राइट? सो इंडिया इज ईजियर, अ लॉट ईजियर. इट इज़ प्रैक्टिकल. काफ़ी लीन मॉडल है. ज़्यादा को पैसे नहीं चाहिए इंडिया में, आपको यार 20-30 हज़ार रुपये में आप शुरू कर सकते हो. अच्छा, या आपको लिटरली, अगर मैं पान की दुकान का एग्जांपल लूँ, उसके लिए भी 2-3 लाख रुपए शायद चाहिए होंगे अगर आपको पान की दुकान सेटअप करनी है. सो आई थिंक इट्स अ लीन मॉडल. इट्स अ गुड वे फॉर पीपल टू स्टार्ट अ बिजनेस. आई थिंक मे बी हमारे ग्रैंडफादर या डैड के टाइम पे अगर यार बिजनेस स्टार्ट करना तो मतलब कि फैक्ट्री सेटअप करो, राइट. और हर बंदा नहीं कर सकता. बिल्कुल. तो वो बंदा सोचता ही नहीं था कि भाई मेरे को धंधा शुरू करना है. वो बोलता था यार कौन करेगा, मैं जॉब कर लेता हूँ. करेक्ट, नथिंग रॉन्ग विद जॉब्स, बट आई थिंक वीव बीन गिफ्टेड आवर जनरेशन टू हैव दीज मॉडल्स वेयर वी कैन थिंक यार हम भी कुछ शुरू कर सकते हैं एंड इट कैन बिकम बिग. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली. लेट्स से कोई 24-25 साल का बंदा है और उनको ये स्टार्ट करना है टू एक्सपेरिमेंट कि यार इससे मैं कितना पैसा बना सकता हूँ, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ. तो व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप? I think the first step should be to understand the business model. YouTube में बहुत सारी free चीज़ें हैं that you can start with. We have a program also, but I would say that you don't have to buy something from day one. Just go and see all the free things. मैंने भी ये किया यार. मैं सबको ये बोलता हूँ कि even before putting your first dollar or your first rupee, आप जितना भी free information चाट सकते हो वो करो, समझो, and then just try it yourself. But eventually you will need some guidance. मेरे केस में भी what was the turning point for me was when I got a mentor in the US and it changed the game. Just to give you some context, हम महीने का $30,000 कर रहे थे. In 6 months, we went from $30,000 a month to $300,000 a month. So we 10x'd our business in 6 months just by getting the right guidance, the right set of people around you. The saying average of 5 people, I completely agree. Even though आप मानोगे नहीं, मैं आधे लोगों से मिला नहीं हूँ बिकॉज जूम कॉल पे बात हुई थी, राइट? बट जस्ट बीइंग विद देम एंड उन्होंने यार दिमाग खोल दिया मेरा. इधर बंदा क्या सोचता है कि चलो लाइक मेरी भी जॉब थी, नॉर्मल जॉब थी, 50-60-70 हज़ार सैलरी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो बंदा सोचता है यार मैं 1 लाख पे कैसे पहुंचूं, ठीक है? दैट्स लाइक द फर्स्ट थिंग. बट व्हेन आई गॉट अराउंड दीज गाइज, दे वर डूइंग $1 million months, okay, which is 8 crores a month.
it's like you दिमाग हिल जाता है भाई कि is this even possible, right? And I think जब हम सुनते हैं कि भाई एलॉन मस्क ने इतने कमाए या अंबानी ने इतने कमाए, वी कैन नेवर रिलेट टू इट भाई, बिकॉज हम शायद कभी वो बनेंगे नहीं और हम उनसे मिले नहीं हैं. बट साथ में अगर संस्कार बैठा है मेरे एंड he for example is doing it, then I'm like, yeah, this guy is doing it, why can't I? So that relatability changed it for me. So that changed the game. And yeah, so if someone wants to start out answering a question, just watch the free resources. आप समझो लोगों से कि कैसे होता है. Try it out yourself if it works good. If it doesn't, then try and get some guidance into it, because आप ये नहीं समझ देना कि just by paying an amount you are basically leveraging someone's years of knowledge, right? So for me, for example, जो मैंने वो 6 महीने में सीखा, अगर मैं वो खुद सीखता ना तो मेरे को शायद 3-4 साल लग जाते. आई लाइक गिविंग दिस एग्जाम्पल ऑल द टाइम. मान लो आपके पास गूगल मैप्स है, मेरे पास मैप्स नहीं है और हमें एक जगह पहुंचना है जो 1 घंटा दूर है. आप भाई घूमते घूमते भाई वो कहाँ है, ये कहाँ है, आप शायद 2 दिन बाद पहुंचोगे और मैं 40 मिनट में पहुंच जाऊंगा. सो समवन जस्ट डायरेक्टिंग यू द राइट वे इज सो इम्पोर्टेंट. But be very well aware that you choose the right person, because today there are a lot of fake gurus, as they call them, and people who are just not subject experts at that. So मैंने भी ये किया था. मैं ना 6-8 महीने तो मैंने बस लोगों को लाइक तरह से नोटिस किया, राइट, कि अच्छा मेरे को ये 2-3 लोग पसंद हैं. बट देन ये नहीं कि मैंने पसंद है तो मैंने ले लिया कुछ उनसे. मैंने नोटिस किया, मैंने उनकी प्रोफाइल्स देखी, हिस्ट्री देखी, पूरा वो बैकग्राउंड वेटिंग किया, और जब मेरे को जो एक बंदा समझ आया, आई वेंट विद हिम एंड इट वाज द राइट कॉल. सो डोंट गेट फूल्ड बाय इंस्टाग्राम. Do your due diligence, and if you feel that that guy is good, then you can go ahead with him. But in the beginning, you don't need anyone. You can start with free resources. भाई यू मेंशन कि योर मेंटर लाइक हेल्प्ड यू 10x योर सेल्स. तो ठीक है, यू गॉट इन द मेंटर, बट एग्जैक्टली स्टेप्स क्या फॉलो किए आपने जो एक्चुअल एक्शनेबल स्टेप्स फॉलो करे होंगे उस टाइम पे? You know, honestly, शुरू में हर बंदे को लगता है, और मेरे को भी लगा था कि आई एम द स्मार्टेस्ट गाय, ठीक है, विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक. आई ऑल्सो गॉट सम गाइडेंस बिफोर फ्रॉम सम पीपल, बट देन आई वाज लाइक, मैं इसकी नहीं सुनूंगा, मेरे को लगता है मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ तो मैं ऐसा करूँगा. गेस व्हाट, वो मेरे लिए काम नहीं किया. सो व्हेन आई साइंड अप विद दिस मेंटर ऑफ माइन, I had something very, I told myself, I was like, Ishan, you're paying him a lot of money. He is where you want to be. Follow the guy blindly. Okay. And when I say blindly, please take it with a grain of salt. ये नहीं कि जो वो कहे कि खाई से कूद जाओ तो कूद जाना. Blindly in the sense कि यार कई चीज़ें ना आपको एक स्टेप पे समझ नहीं आएंगी जो उस बंदे को पता है. तो अगर वो कह रहा है तो वो करो. So I just followed him blindly, man. Of course, I worked hard, I showed up, I did all those things, right? वो तो मतलब prerequisites हैं. अगर आप लोगों को लगता है मैंने कोर्स ले लिया और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, वो सबसे बड़े misconception है. और मेरे को भी लगा था, honestly, when I paid him, I was like, okay, now I'm a millionaire because I paid this guy money. But guess what? Then I was thrown to the wolves कि भाई काम तो तेरे को ही करना है ना. So you still have to work, but I think follow the process, show up. I know it's cliche, but don't give up. I feel like मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था यार कि I'll give up. I always thought that you have to burn your bridges, right? You can't go back. For me, आजकल ये बहुत चल रहा है ना ट्रेंड की, साइड हसल है, फलाना है. There's a saying, right? If you treat your business like a side hustle, it will give you returns like a side hustle. People treat it like a side hustle but want returns of a main business. So you see the disparity there, correct? So follow the process. I don't think the side hustle shit works. Sure, मैंने भी किया था. Suppose मेरा ना 9 to या 10 to 7 job था, 7 to 12 I used to work on my business. ठीक है. I got it to a point जब तक it met my salary. जैसे suppose मेरी 1 लाख सैलरी है तो मेरा धंधा भी 1 लाख कमा रहा है. Then I took the calculated risk कि भाई ठीक है, it's making me, I can now sustain the lifestyle. Then I quit. So yes, it was a sort of a side hustle, but then eventually you have to go all in, right? And this is not for everyone. If you want to make 50, 60, 70, 80,000, 1 lakh with your side hustle and आपको नहीं करना और good. But अगर आपको वो लाइफ जीनी है और आपकी एस्पिरेशन है तो भाई आप साइड हसल नहीं कर सकते. So that's my personal view on it. भाई 2 observations from this answer of yours. You mentioned कि अगर आपको 50-60,000 करना है तो you can do it very simply. But if you want to grow bigger, you have to treat it as a main business. So 2 सवाल हैं यहाँ पे कि अगर मेरे को सिर्फ 50K a month कमाना है in profit, so can I do it as a side hustle? Yes. Second thing, अगर मुझे scale करना है तो what amount of cash do I need to have to do that? So the beauty of this business is that you can get profitable in the first week, right?
जो हम सिखाते भी है इनसाइड आवर प्रोग्राम ecommerce यही होता है कि भाई आप 1 रुपये डाल रहे हो तो आपको सपोज 7 रुपये वापस मिल रहे हैं, वो आपको फेसबुक के थ्रू पता होता है। एंड वी ऑलरेडी टेल पीपल कि अगर आप 1 रुपये डाल रहे हो तो आपको 6 रुपये कमाने पड़ेंगे टू मेक 20% नेट प्रॉफिट। सो एंड यू गेट योर कैश फ्लो साइकिल इज वेरी लेस। ये नहीं कि आपको 6 महीने में पैसे मिल रहे हैं, आपको भाई 3-4 दिन में पैसे मिल रहे हैं। मैक्सिमम पूरी साइकिल फ्रॉम लेट्स से ऑर्डर टू डिलीवरी टू गेटिंग योर पेमेंट COD है, तो 10 दिन मान लो आप फॉर एग्जाम्पल, तो आप वो रोटेट कर सकते हो। So this is what I did in the beginning. Again, another advice for people who are watching: when you start making money, man, stop buying fancy shit. From day one, I reinvested 90%, if not 95% of my profits back into the business. That's the only way you can scale from, let's say, 30K to 300K, right? Because if you are doing 300K, for example, you're doing 10 grand a day. $10,000 मतलब 8 लाख रुपए सेल। बाय द वे इसमें कुछ RTO फार्टियो नहीं है, ये पूरी सेल है, क्योंकि आजकल लोग फिगर दिखाते हैं 2 करोड़ का, उसमें से सेल एक्चुअली होती है 40 लाख, करेक्ट? तो ये US बिजनेस था। तो सपोज अगर आप 10 लाख की सेल कर रहे हो तो भाई आपको एड्स में अराउंड एटलीस्ट 4 लाख रुपए एड में लग रहे हैं आपके, ठीक है? आपके 2-2.5 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए मतलब 2 या 1 लाख, तो मतलब 8 लाख रुपए की सेल में से 5 लाख रुपए तो आपका दिन का एक्सपेंस है। अब वीकली लगा लो तो 40 लाख रुपए का आपका कैश फ्लो साइकिल हो गया। How do you think you will have that cash? It's only when you don't go buy a Lambo or a BMW in the beginning and you put it back into the business. So answering your question, you said, how do we scale? Just don't have shiny object syndrome. Don't go buy that nice watch or an expensive shoe that you can't afford. Put it back into the business. Come to a point where you are comfortable with buying things. See, I'm not saying don't buy nice things. I like buying nice things, but it should be math. It should be like, okay, if I'm earning $100 and this is 10 rupees, I can afford it. But if it's 90 rupees, I can't, because that should be my business. So put it back into the business. That's how you can scale. Let's say somebody wants to start this business and they have 10,000 rupees in their hand. क्या वो कर सकते हैं? यार आंसर इसका yes and no है। मतलब yes ही है, of course you can start. इंडिया में, बाहर तो नो चांस। सिंपल लॉजिक है। हम जो बोलते हैं कि भाई आपको एक गेम प्रोडक्ट का है, इट्स अ मार्केटिंग लेड गेम, करेक्ट? एक प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए व्हाट वी रेकमेंड इज 2,000 रुपीज़, ठीक है? तो अगर आप 10,000 का आपके पास बजट है तो आपके यार मतलब शॉपिफाई 20 रुपये में आ जाएगा, 1,015 डोमेन आ जाएगा $10 में, 800 रुपये में। तो 10,000 में टेक्निकली पॉसिबल है, बट यू आर कटिंग इट टू स्लिम। आई फील लाइक मे बी 20,000-30,000 वुड बी द राइट अमाउंट। बट इफ द आंसर इज कैन आई स्टार्ट, ऑफ कोर्स आई कैन। एक होता है कि भाई आई कांट स्टार्ट ओनली, you can start, but you won't, if you don't get it right in the first 3-4 products, you probably then need more cash. So let's take 30K. अगर 30K है मेरे पास तो तब मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए? Yes, so most of the money is going in ads. Okay, let's say I get Shopify for 20 rupees. I make my own website. शुरू में भाई सब करना होता है खुद, because you have to save money, right? वेबसाइट बना ली, प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, प्रोडक्ट के पैसे आपको देने नहीं, क्योंकि सप्लायर वो बाद में देगा जब वंस द ऑर्डर इज डिलीवर्ड। सो मोटा मोटा जो जा रहा है आपका वो पैसे, वो जा रहे हैं एड्स में। अगर आपके पास 30,000 रुपये, आप आराम से 10 से 15 प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो। हमारा जो रेशियो है इनसाइड अ प्रोग्राम इज दैट, फॉर एग्जाम्पल, एंड बाय द वे आई एम नॉट जस्ट प्लगिंग माई प्रोग्राम हियर, आई एम गिविंग यू डेटा बेस्ड ऑन थिंग। आई डोंट वांट टू टॉक इन द एयर, राइट? We have a ratio of we find a winner, people inside the program find a winner every 5 to 7 product tests. So basically 5 से 7 product tests में you get your winner. That winner covers the losses for the 5 that didn't work and obviously makes you the money on top. I am also doubling that scenario कि चलो 7 में नहीं तो 15 में तो मिल जाएगा। And once you find that winner, फिर तो वही वाली बात हो गई भाई, फिर आप स्केल करते हो, आप उसे प्रॉफिट निकालते हो, and then you rinse and repeat. So that's how I would do the 30,000. Do you have a checklist to select the product? Yes, we do have a checklist. We actually have a very everything that we do is very data driven. I think this is something that I keep hammering, like I've been hammering to myself for the last 3-4 years, and everyone that I meet or teach or whatever, is that never ever work with this logic कि यार मेरे को लगता है ये चलेगा. That is the recipe for disaster. You always want to be data driven. Even today, fine, if you have some sort of experience and you spent a lot of money on ads, आपने भाई scaling की है, तो आपको एक intuition होता है. But guess what? वो intuition is also derived from the data that you've seen in the past. When someone starts off, you have no data, bro. You don't know anything. You don't know what is a winner like. For example, मेरा अगर किट स्टोर है, मैंने भाई उससे 10 करोड़ की सेल कर ली एक किट प्रोडक्ट की, मेरे को पता है कि ऐसा एक और प्रोडक्ट आया है, मैंने वो स्केल किया था, इंट्यूशन है, तो मैं टेस्ट कर सकता हूँ. शुरू में डोंट. सो लेट्स से वी हैव 15 KPI पॉइंट्स दैट वी
तो आपने फनल सुना होगा, राइट? हमारा एक प्रोडक्ट का फनल है, इट्स कॉल्ड द प्रोडक्ट इंडेक्स केपीआई। हम उसमें ये बोलते हैं 15 पॉइंट है भाई, लाइक स्मॉल इन साइज होना चाहिए क्योंकि शिपिंग कॉस्ट लो होगी, हाई परसीव्ड वैल्यू होनी चाहिए बिकॉज पीपल शुड फील इट्स एक्सपेंसिव सो दैट यू कैन सेल मोर, AOV शुड बी हाई, women dominated होना चाहिए because women are impulsive buyers. So we have these 15 points and we say it should match 7 out of 15. So you put your product into the funnel. If it ticks 7 points, means that this passes the test. More the merrier. So if it has 10 out of 15, that means even better. If it has less than 7, that is the data telling you, based on our crores and thousands of product tests, that this product probably won't make it. Now, take it with a grain of salt. ये नहीं कि अगर वो 10 out of 15 है तो guaranteed है, but at least it's filtering out to you. Then हम क्या करते हैं, वही products हम फिर एक sheet में डाल देते हैं, and then from the sheet we keep picking and we start testing the product. So again, like I said, everything is like step. That's why we have people getting so many results, because हम उनको यही बोलते हैं, भाई वो मेरा जो मैंने आपको पहले बोला था, follow the process blindly, अपना दिमाग शुरू में ज़्यादा मत लगाओ, पैसे कमा लो, because most people give up in businesses because they don't get success early. And I think, imagine a case, you go to the gym, you keep going, you don't see any result. But imagine you start seeing results early. You get motivated, right? I want to go again. Same thing here. Get that result quick, and therefore now you will feel like, so get that first winner quickly, and then you can do your आप लगा सकते हो मेरा दिमाग, but शुरू में get that success as soon as you can. So yeah, that's the product research that we have, data-driven method. What's the most amount of money you've made with a single product? Somewhere close to $2 million, or about 16 crores, more than that. With what product? It was a kid's educational product. And the funny part is that the chunk of that sales came in 3 months. So e-commerce में क्या होता है, Q4 जो अभी है, October, November, December is the heaviest season of the year in terms of sales, US में especially. तो जितना पैसा हम इस 3 महीने में कमाते हैं, इंडिया में नहीं, बाहर, वो पूरे साल में नहीं कमाते लोग, राइट? तो क्या होता है कि your business is doing well, like maybe it's doing 100K, 200K, 300K, but the moment October comes, like October is like our Olympics. We prepare for it, everything, and भाई पूरा घर लगा देते हैं फिर. Of course, this is when you have a winning product, working funnel, you have a team, everything. So yeah, we had this winning product which was working. We found the product in March. We slowly, obviously scaled it. हमने influencers के साथ काम किया, हमने content बनाया उसके ऊपर, और जैसे ही अक्टूबर आया हमने उसको डाल दिया basically. Ishan, you mentioned कि October, November, December is like your heaviest month in terms of sales in the US market. So let's say somebody's listening to us and they want to make their first crore before 2024 ends. Okay. So what advice would you give them? I think if they want to make their first crore in 3 months, it's probably not going to happen. I'll just be honest. It took me a year and a half to get to that point where I could capitalize on those 3 months, right? The first 6 months or 1 year was trial and error. मेरे पहले 6 Shopify स्टोर एक तरह से फेल हुए हैं, ठीक है? By fail I mean वो कुछ ब्रेक इवन हुआ, किसी में लॉस हुआ, but I figured out a way. Most people, अब भाई US में पता है टेस्टिंग में भी बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ टेस्टिंग में मैंने आपको बोला 2,000 रुपये, वहाँ लगते हैं 25,000 रुपये पर प्रोडक्ट, बिकॉज द कॉस्ट इज हाई, राइट? द CPC, द कॉस्ट पर क्लिक, द ऑडियंस इज मोर एक्सपेंसिव. हाँ, तो अगर आपको भाई 10 प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं तो आपको भाई लाखों में पैसे चाहिए. अब ऑब्वियसली यू डोंट, लाइक लेट्स से आई रिमेंबर आई हैड अ कॉर्पस ऑफ 2 lakhs दैट आई हैव सेव्ड अप, देन आई वाज लाइक भाई ये है मेरा बजट to do everything. I have to make it work in this, otherwise I'm dead basically in the thing, right? So what I did is, obviously the first couple of ones didn't go well, but लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, काम नहीं करता, छोड़ देते हैं. आई वाज लाइक यार मैंने इस पर टाइम लगाया, मैंने डिजाइन किया है, हाउ कैन आई नाउ मोनेटाइज दिस? सो आई फिगर्ड आउट, आई स्टार्टेड फ्लिपिंग वेबसाइट्स. तो सपोज मैंने स्टोर बनाया, टेस्ट किया, नहीं चला, बट मैंने कुछ बना तो लिया ना. मैं फिर फ्लिपा पे गया, शॉपिफाई एक्सचेंज पे गया, और ये जो साइट्स हैं जहाँ आप वेबसाइट बेच सकते हो, मैंने भाई वो वेबसाइट किसी को टेप दी, बिकॉज टेक्निकली जो US क्लाइंट है वो it's a website service, right? He wants a ready-made thing, so he paid me, let's say, $3,000 for the website. Now I have this capital again, so I am alive again. I'm back from the dead, जैसे वीडियो गेम में होता है, right? फिर टेस्ट किया, नहीं चला, वो फ्लिप करी, ऐसे करके I kept myself in the game. This is something that I want to tell everyone. In the beginning, you just need to find a way to stay alive. It's not about making that 1 crore or 2 crore. Let's be realistic, it's not going to happen, right? Just stay alive.
learn the skills, and if you stay alive for level 2 1 2 3 4 5, it's like क्रिकेट में होता है ना कि 20 के ओवर अगर आप विकेट नहीं करे तो फिर एंड में मार सकते हो आप रन, राइट? वही वाला सीन है। अगर विकेट एट बीच के ओवर में सारी निपट गई तो फिर आप ऑल आउट हो जाओगे। स्टे अलाइव, लर्न द स्किल सेट एंड हसल मैन, यू गॉट टू फिगर आउट वेज, बिकॉज इवन दो हम ट्राई करते हैं कि हम सब चीज़ को ना एक बहुत ही बिट साइज प्रोसेस ड्रिवन वे में दे दें आपको, ताकि आप यू कैन गेट दैट सक्सेस, बट देयर some things you can't just systemize, like, you know, you just have to have that hustle attitude that I want to stay alive. So they probably won't earn their 1 crore in 3 months. What they can do in these 3 months is understand how the model works, get knowledge, learn, you know, and get practical knowledge. इसका मतलब है ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखो, try it out, right? And then eventually learn the craft and take it day by day, and then eventually one day they can come to that point where they can make a crore in 3 months. So how quickly have you made a crore with a product? How quickly? So at our scale, we were doing about $40,000 a day in sales. This was 2022 Q4. So yeah, I mean, you can do the math there. We would have probably done close to $500,000 in sales. That's about 4 crores. We would have probably made a crore plus. That was December of 2022. So let's talk about some niches that work in India. So what kind of products work in India? So I think what works in India is broad niches. I would say home is a great niche because Indians are homely as people. Kitchen is a great niche because we cook a lot. And बाहर का होता है eating out, but यहाँ घर का खाना है plus. And I think kitchen niche ना बहुत ही outdated है. अगर आप जाओगे अपने kitchen में, मैं भी जाता हूँ, तो वही भाई वो 30 साल पुराना वो knife चल रहा है वो, you know. वैसे बाहर there are these cool knives and like there's multiple things which are happening, and for some reason it's almost normalized कि यार यही चीज़ है तो यही घिसी घिसी वही वो मिक्सी वही वो, तो वो innovation, I don't want to say innovation, but maybe innovation also वो हुई नहीं है. So I think kitchen is great because if you can solve someone's problem, ये भी एक by the way KPI point है, solve a problem और improve someone's lifestyle. तो अगर आपने भाई किसी की एक टमाटर काटने का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया फास्टर वे में, दैट प्रोडक्ट इज अ सॉल्यूशन. सो किचन, होम, ब्यूटी, kids is a great niche. Again, Indians love their kids. You will always be a kid no matter how old you are. That's not the same thing in the West, right? In the West, after you're 18, you are not a kid, you are an adult. But over here you could be 50 years old, you're still your parents' kids. So kids is a great niche. Sports is coming up to be a great niche. मैं आजकल देख रहा हूँ ये पैडल काफ़ी चल रहा है, देखा होगा आपने. तो पैडल चल रहा है भाई, तो अगर आप एक पैडल बोर्ड में, चाइना में था 2-3 हफ्ते बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आई वेंट फॉर द कैंटन फेयर, तो उसमें भाई एक पूरा सेक्शन था. सो इफ यू कैन स्टार्ट, अब इंडिया में कौन सा ब्रांड है आप देखो, डीकैथलॉन है एक, देयर इज नो, और उसमें भी बहुत एंट्री लेवल प्रोडक्ट मिलते हैं कि चलो आपको एंट्री लेवल को लेना है तो थोड़ा सा चीप क्वालिटी का मिल जाएगा, बट देयर इज नो लाइक एक्चुअल ब्रांड. वही स्पोर्ट्स शॉप्स हैं जो टिपिकल हमारे टाइम पे मिलती थी कि आपको क्रिकेट का एक किट लेना है, पैड पुड लेना, जाओ उधर. So I feel like sports could be good. Sports is growing. I think, yeah, these niches would be. I think after the product, ad is the most important thing in order to make sales, right? Yes. So what advice would you give to somebody about running ads for a product? I think again, have that process like I told you. Your ad should not be random कि मैंने कहीं से भी clips उठा ली और मैंने बस कुछ ना कुछ करके डाल दी. वो एक broken down होना चाहिए. So for example, आपके पहले the most important part of the ad is the hook, right? Which is the first 3 seconds. This is when the customer decides if he wants to view your ad or not. Now, it needs to be aggressive. It needs to be provocative. It needs to be like, let's say if you are selling a fitness product, I would call someone like, are you tired of like being fat? I would piss him off, you know, because the main thing you want to do, आपको एक emotion evoke करना है उससे. Yes, touch that pain point. And I would say वो नहीं होता मूवीज में दिखाते हैं किसी को गोली पड़ती है तो बंदा उसको प्रेस करता है, वाह चिल्लाता है, और तो you literally have to do that. When you can do that, you can get the customer hooked. Now that you have him hooked, then you agitate, which is what I just said. Agitate the pain point, right? And then you give solution, which is product intro. Then you never show features, you show benefits. You never say my massager has 3 buttons and 15 this, that. You say you will feel like you are surfing on clouds after using it. So you're showing the feeling and the benefit of the massager, and let's say not the feature. And then you have your customer testimonial, and then you have your CTA. So as long as you have like a process for your ad, and then you find the right pieces of content to fit in, that is the best way to go. Creative is king.
ओके, इन मीडिया बाइंग और फेसबुक एड्स। सीबीओ एबीओ टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है। अगर आप वो मैं कॉस्ट कैप यूज़ करूँ, ये यूज़ करूँ, भाई वो सब ठीक है, बट अगर आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है तो फिर आप कितनी भी मीडिया बाइंग कर लो, ज़करबर्ग आपके लिए कर लेगा, बट चलेगा नहीं वो। सो यू हैव टू गेट योर क्रिएटिव राइट, एंड आई थिंक हैविंग दैट स्ट्रक्चर दैट आई जस्ट एक्सप्लेन वो इंपॉर्टेंट है। Are there some products जिसमें people should not get into some categories? Good question. That's a very good question. I think I'd like to break that question down. If you are a beginner, what should you not get into? Because let's say if you are experienced, then you can get into anything, right? Okay. As a beginner, I think you don't want to get into anything which is consumable. Let me explain. Okay. जो भी एक बंदा कंज्यूम कर रहा है, मतलब खा रहा है, Hmm. गमी बेयर हो गई या अप्लाई कर रहा है, क्यों? Hmm. क्योंकि आई थिंक अगर आपने उसका एक अच्छा क्वालिटी टेस्ट नहीं किया ना, देन यू कैन गेट इनटू ट्रबल। भाई किसी को खा के किसी को कुछ हो गया, स्किन में कुछ लगा के कोई रैश हो गए, दोस थिंग्स कैन गेट यू इनटू ट्रबल। गो फॉर वनीला प्रोडक्ट्स व्हिच इज लाइक बेसिक शिट, राइट? किचन प्रोडक्ट से क्या ही होगा, करेक्ट? सो आई वुड से maybe don't get into that in the beginning. Get your experience, and once you have your experience, then you can get into more of these consumable products. यूएस में तो भाई और भी दिक्कत है कुछ, वहाँ तो भाई लॉ सूट आते हैं सीधे, ठीक है, एंड हैवी लॉ सूट्स, लाइक यू नो व्हाट आई मीन। सो ओवर देयर इंडिया में मे बी स्टिल यू कैन नेविगेट। इफ यू वांट टू डू इट इन द यूएस, यू डोंट हैव द राइट सर्टिफिकेशन, एफडीए अप्रूवल, एंड समवन, इवन वन पर्सन गेट्स इनटू ट्रबल, you could be in a multi-million-dollar lawsuit, and that's just asking for trouble. So I think just avoid that in the beginning. Let's say कोई 24-25 साल का बंदा है and they have their product sorted out, ads उनको आते हैं. Now how to choose the supplier? How to choose a supplier? I think supplier is important in the beginning. You can go for some of the platforms that are offering products. जो जैसे हैं काफ़ी हैं, like there's Reposo for example. They have a wide selection of products. If you don't want to go with them for whatever reason, you could go on IndiaMart. And I recommend that you should go for a supplier which is in your city. Okay. Let me tell you why. सप्लायर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, ठीक है। एंड मैं ये नहीं कह रहा, बट आपको नहीं पता कि वो सप्लायर कैसा है। मेरे साथ सिचुएशंस हुए हैं कि मेरे पैसे लेके लोग भाग चुके हैं और मेरे को पकड़ना पड़ा है उनको और वसूल करना पड़ा है पैसा, करेक्ट, लिटरली जाके। वो मैं क्यों कर पाया? क्योंकि वो मेरी सिटी में था। अब वो गुजरात में बैठा है फॉर एग्जाम्पल, आप जाओ उसको पकड़ो अब। तो आई फील लाइक जस्ट एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म यू शुड हैव योर सप्लायर। एंड वन मोर रीजन फॉर दैट, नॉट जस्ट दिस पार्ट, ये तो चलो एक तरह से एक वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, बट पॉसिबल है, राइट? बिजनेस है भाई। बिल्कुल। दूसरी चीज है कि आप उसको एक तरह से हाइब्रिड ड्रॉप शिपिंग बोलता हूँ उसको मैं। सपोज यार आपको 1000 पीस नहीं लेने, आपका सप्लायर सपोज हम अभी गुड़गांव में है, वो दिल्ली में है, ठीक है। आप उसको बोलो भाई मेरे दिन के सपोज 50 ऑर्डर आते हैं, आप उसका 50 ऑर्डर डेली उससे लो, पोर्टर भेज दो उसके पास, पोर्टर से वो दे देगा 50। सो यू कैन लिटरली ड्रॉप शिप फ्रॉम अ सप्लायर if he's in your same city, versus let's say if you're ordering the stock from Mumbai, it will take a few days. So this is technically not drop shipping because you are actually holding inventory, but you are somehow managing the inventory. So let's say if you can project that I'm getting $100 every day, every morning you call him at 11 कि भाई 100 ऑर्डर भेज दे, और वो सेटिंग है आपके साथ। एंड रिस्क भी क्या है 100 ऑर्डर का ना, मतलब 100 ऑर्डर की कॉस्ट कुछ नहीं होगी, 5-10 हज़ार, नथिंग मोर देन दैट, अगर 50-100 रुपए का प्रोडक्ट हो। सो सप्लायर शुड बी इन योर सिटी. Supplier should have good rating on IndiaMart. You can go meet him also, and then establish a relationship. And I think if it checks all these boxes, then sure, that's the kind of supplier you should go for. If you want to go for a platform, there are those available also. You just have to try both and see what works for you. What's the most amount of money you've made in a day? I think the most amount of money we made in a day was after we sold a business. So yeah, that was close to I can't disclose the exact amount, but it was around $500,000 so mark, so about 4 crores. And what business, if you can share? It was an e-commerce brand that we sold to a buyer in the US. एंड तो मैंने आपको बोला था मैंने फ्लिपिंग स्टार्ट की थी, बट वो फ्लिपिंग तो अब वही है ना कि मेरे को बहुत शुरू में ही वो चस्का चढ़ गया था कि भाई इसको मैं फ्लिप कर सकता हूँ। तो जब मैंने व्हेन आई स्टार्ट बिल्डिंग, तो थ्रू माय मेंटर्स ही टोल्ड मी दैट यू नो यू बीन फ्लिपिंग फॉर 5, 10, 20, 25,000 डॉलर, ठीक है, बट भाई बड़ा सोच। एग्जिटेबल बिजनेस इस वैल्यूएशन का, आई एम टॉकिंग एनीवेयर फ्रॉम $100,000 to $1 million, दैट आई कैन टॉक टू बिकॉज दैट रेंज आई नो। उससे ऊपर भी आई डोंट नो बिकॉज मैंने किया नहीं है। आई नो द सब्जेक्ट बट आई टॉक अबाउट व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई नो।
द बिजनेस नीड्स टू बी एग्जिटेबल। उसका मतलब क्या है कि जैसे आपको अगर मेरे से बिजनेस लेना है, तो अगर आप आ गए तो just because I leave, the business will also function. So one of the main factors there is how much is the founder or the person who's involved in the business, how much involvement does he have? So I already knew 8 months before me selling the business that I have to check these points. Okay. So let's say my involvement in the business was 10 hours a day. I had to reduce that to 2 to 3 hours a day. How do I do that? I have to hire the right people. I have to create systems. I have to create processes that even if I'm not there, the system functions. Because now that this guy comes on board, he can also run it with the same systems and the same team. So you have to plan this exit. You have to इस level की उसमें you have to get in touch with the broker. ये ऐसा नहीं है आपने website list कर दी और वो बिक जाएगी. I got in touch with the broker in the US. उसने मेरा वो वेट किया. आपको बहुत सारी अकाउंटिंग करनी होती है. यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस शीट, कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, स्टफ लाइक दैट, जो मैंने सबसे पहली बार की. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, बट इट्स वर्थ इट बिकॉज गेस व्हाट, जो आपने प्रॉफिट कमाया बिजनेस से वो तो कमाया है, बट आपने एक वन शॉट पेमेंट भी कमाई, which really again catapults you, right? Because it takes you forward, and then you can maybe stop worrying about money now and then start. Because I think in the beginning, when you want to build something good or great, whatever, you shouldn't be worried about paying your bills and like, I have to do this, I have to do that. So I think after that, बंदा यार आराम से ये क्या कि अगर मैं अगले 5 साल भी काम ना करूँ ना, तो मैं कुछ सिर्फ सोच सकता हूँ. So I think that feeling is like priceless, and it helps you. Your creative juices come out really nicely, and you can think in peace. Because in the beginning, I've been there, right? It's like every day you wake up with this, which is also good by the way. Fire अभी भी है, दूसरी fire है, but वो एक तरह से nagging fire है कि अरे नहीं, if I don't do this, I can't pay my rent, or I can't pay my EMI, or all those things. So yeah, that exit was, I've had multiple exits, but that was the biggest one. I've had exits from $1,000 all the way up to what I just told you. But I think it's really cool that you can just create something in the air and then sell it to someone, Right. Yeah. Are you at that stage where you are not working for money, like you mentioned, Avi? Uh, you know, I think now, yes, as of now, I'm not. Of course, money. I'm extremely money driven. I am not going to bullshit anyone and say this. Everyone is money driven. People just don't say it live. And it's not about money driven. It's because see, my reason to be money driven is not because मैं कोई like it's like कोई भूखा हूँ पैसा के लिए. It's for a reason. Money allows me to do few things. What? It helps me work with the best talents. If you want to work with the best people, you have to pay them the best money, right? Right. It activates networks for me. So money is just a tool for me to activate things. Correct. अगर वो कुछ और चीज होती तो मैं वो चाहता. So it's not like yeah, you get the money, it activates networks, talent, people. You can go places. You can of course get the freedom that you want. So I am definitely, yes, working for money. If I had to give a percentage to it, I would say 20% for money and 80% like we're basically building out a few more businesses in the educational space, which we're currently working on. It's a very big project. And उसमें पता है क्या है, हम ये नहीं सोच रहे कि भाई अच्छा पैसे कैसे कमाएंगे, हम ये सोच रहे हैं वैल्यू कैसे दे रहे हैं. ठीक है. And we are fine if you don't make money in the beginning also, because we know eventually once the value is given, the money will come. So right now, there are two types of plays. You have a cash play and you have a wealth play. I'm focusing on the wealth play right now. So that even if this compounds in the next 3 years, I'm fine with it. So I think that answers your question. That is not probably for the money. But when you are starting out, obviously you have to Oh focus yeah, yeah. Oh on no, the only cash play. only focus on the cash play. No. Even now I have cash plays. Never leave the cash play. Have the cash play running side by side, so that it can match your lifestyle and maybe improve it also, and have your wealth play going. It's not either or, it's both, right? And in an online business, the beauty is that a lot of the things are like adjacent. So for example, जो e-commerce के कॉन्सेप्ट है वो एजेंसी में यूज हो सकते हैं, जो एजेंसी के कॉन्सेप्ट है वो एफिलिएट मार्केट में यूज हो सकते हैं. आप पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, वो भी एक कंटेंट. आई आल्सो क्रिएट कंटेंट, आई गेट ब्रांड डील्स. It's ये नहीं है कि एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और एक फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूँ. It's very different. So we have that option to have multiple streams of income because we are in the online space. In the beginning, of course, have that number in your head that this is the number I want in my bank, for example, or let's say a monthly recurring money. And don't think, this is my view, don't think about like
oh, I want to change the world or some bullshit like that. Because bro, be honest, like you can change the world once you take care of yourself and your family. Then when you're self-sufficient, you've taken care of your family, you've taken care of yourself, then you start changing the world. uh, Love what you do. I also kind of disagree with that, because I think in the beginning you don't have to love what you do, man. You just got to make the money, then you can love what you do, right? Because मैंने गलती की थी, like, oh, I should be passionate about what I do. You don't have to be passionate. You have to be passionate about your bank balance. That's it. You get the money first. Once you have that mark set up, then you can now ask yourself कि अच्छा अब क्या, what do I like, and let me do that. तो अब मैं वो कर रहा हूँ what I like. पहले there were things that I didn't like per se, but I did it because it made me money. Simple. Bhai, what's the most expensive thing you've bought? Man, I don't buy expensive things, honestly. Okay. I think the most expensive thing probably would be I bought a commercial property Okay. 2-3 months back Hmm. for close to about 3 crores. Hmm. So that's probably the most, but that is not a expense. It's obviously an investment. Right. It's rented out. I'm getting rent every month. Hmm. So that would probably be the most expensive thing. In terms of depreciating assets, I have not bought anything expensive. Okay. Yeah, not yet. Because, and मेरा ये rule है जो बहुत I live by this philosophy of delaying gratification. I like nice things. Okay. I'm just in talks. I want to buy this really nice car, and it's been in my head for a while. Which car? So it's the BMW M3. Okay. Okay. I want to get this car, and I can get it now, right? एंड मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, हमने गाड़ी भी देख ली, मेरे को एग्जैक्ट गाड़ी पता है कौन सी है, कहाँ खड़ी है, कौन ओनर है. फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड हैंड लेता हूँ, अगर मैं नहीं भी लेता हूँ, पूरी मैंने उसकी कैलकुलेशन कर दी है. सीए से भी बात कर ली मैंने भाई कि भाई कहना है, उसने बोला हाँ भाई अगर इतने बनती है कि आप इतना डाउन पेमेंट कर दो, इतनी EMI बनी, यू कैन अफोर्ड इट. ठीक है, 10% ऑफ योर इनकम, 8% ऑफ योर इनकम, जो भी, सब कुछ कर लिया मैंने. इट्स लाइक आई कैन डू इट, बट आई एम डिलेइंग इट बिकॉज आई एम लाइक नहीं यार, मतलब अभी नहीं. मैं आई हैव गिवन माई सेल्फ अ टारगेट, सो आई एम लाइक just delay gratification, right? Just delay it as much as you can. और जब फट जाएगा दिमाग तब तो ले ही लेना फिर, right? So I think yeah, that's what's next on line for me, and it's been on my mind for a while, bro. I'm not gonna lie. I've loved that car. It's from day one. Like I like that car to an extent that if you give me a Lambo, I won't choose the Lambo. I'll choose this car. That's how much I like it, and I've been like fascinating over it for a very long time. And but yeah, it's just that I'm trying to delay it as much as I can. So I'm telling myself कि चलो ये साल खत्म हो जाए. समझ रहे हो कि ये Q4 है, इसमें फाड़ दो, then it makes sense. So yeah, set a goal for myself and do it. So I think yeah, delay gratification has become, but also treat yourself when you can. I like traveling. Just this year alone, I've been to like 9 countries. Travel, have experiences, and yeah, so that's probably it for now. भाई फाइनली वन क्वेश्चन टू क्लोज दिस कन्वर्सेशन, एक जेन्युइन सवाल है मेरा कि स्टार्टिंग में यू मेंशन कि एनी अमाउंट ऑफ मनी इज पॉसिबल, राइट? तो फॉर समवन हु वांट्स टू स्टार्ट, व्हाट इज अ रियलिस्टिक गोल दे कैन सेट फॉर देमसेल्व्स कि हाँ 1 year डाउन द लाइन आई शुड बी एट अ स्टेज वेयर आई कैन मेक this X amount of money? What is that amount of money? Okay, so I'll give an example. I can speak out example. There's I just yesterday shot not a podcast but like a student interview for my YouTube channel with a person called Vishal. He last month, or in last month in September, in 27 days he did 1 crore in sales. Okay, this month he's on track to do 2 crores, and since he joined the program in Jan, he's done about 7 crores in sales. Okay. It'll be out on my channel. People can go watch it. Abhi out nahi hai. It'll be out in the next couple of days. Probably by the time this is out, it'll be out. I think that's realistic in a year. Okay. Right? If you follow the process, if you have the right guidance, you just need, because it's I think 0 to 1 is the hard part. 1 to 10 is easy मेरे हिसाब से, because 0 to 1 के बाद 1 to 10 जो है ना, वो एक तरह से डुप्लीकेशन है, फिर क्लोनिंग है वो, कि भाई मैंने ये पता है, अब मैं इसको बस मेरे को 10 चीजें और ऐसे करनी है. The 0 to 1 is hard, and most people give up on that 0 to 1. So if you can just cross that 0 to 1 bridge, I think you can get to 1 crore a month in sales very realistically. But even if you don't want to get there, 1 lakh a month, 1 lakh a day in sales is very possible. And you can surely 2x or 3x your salary and work when you want, work from where you want, and most importantly also work with who you want.
Most people who go to their office hate the people they work with, bitching about each other. You get to choose with people, because I think right now the people I'm working with in my team, I love all of them, man. हमें मज़ा आता है काम करके. मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, मेरे को मज़ा आता है. वर्सेस मैं किसी की शक्ल देखता हूँ फिर आ गया ये आज, you know what I mean? So all the things combined together, I think it's not just the money, it's all these other things, because money is good, but like there are other things also which mean more, right? Which is what I mentioned. So I think you need to, why should you settle for less, right? When you have the option to get all of them, why should you? If you are someone who, यार आपकी 5-6 लाख भी salary है for example, but you're a corporate slave, right? What's the fun in that, man? And with all due respect to corporate people here, I'm not trying to take a shit on anyone, but I'm just saying that if you are not happy, if you are happy doing it, good. If you are not happy, then you have other vehicles in life also to exercise it. So why not, bro? And guess what? The best time to start was yesterday. Right. Awesome. Thank you so much, Ishan. I loved it. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you for having me.